हेलो एवरीवन। आज से हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग का फर्स्ट यूनिट आज पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजरली तीन टॉपिक को कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, देन व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, और फिर हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग और हार्ड कंप्यूटिंग में डिफरेंसेस क्या है उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The idea of soft computing was initiated in 1981 when Lofty Eliaskar-Zadeh, A stands for Eliaskar-Zadeh, published his first paper on soft data analysis, that is what is soft computing. तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टर्म कैसे आया? 1981 में एक प्रोफेसर थे लॉथवी एलियस्कर जादे, जो कि एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में। उन्होंने अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश किया था ऑन व्हाट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग, जिसमें उन्होंने इस टर्म को पहली बार जिक्र किया था। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता क्या है? सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज अ फ्यूजन ऑफ मेथोडोलॉजीज डिजाइन टू मॉडल एंड इनेबल सॉल्यूशंस टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सॉफ्ट कंप्यूटिंग उन सारी मेथोडोलॉजीज का संगठन होता है जिसका यूज़ किया जाता है वैसे मॉडल को डिज़ाइन करना जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और वैसे मॉडल को डिज़ाइन करना विच हैज़ नॉट बीन मॉडल्ड एट, जो आज तक मॉडल नहीं किया गया है, और टू डिफ़िकल्ट टू मॉडल मैथमेटिकली, जिन्हें मैथमेटिक की मदद से मॉडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब देखते हैं द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। As per Professor Zadeh, the soft computing is an emerging approach to computing which parallels the remarkable ability of human mind to reason and learn in an environment of uncertainty and imprecision. तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग अप्रोच है कंप्यूटिंग का, जो ह्यूमन माइंड के रिमार्केबल एबिलिटी को मिमिक करता है या फिर पैरेलल करता है। हमारा ह्यूमन माइंड कैसे किसी चीज को रीजन करता है, लाइक हमारा एनवायरमेंट आर अनसर्टेन, इम्प्रिसिजन, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे सीखता है, क्वेश्चन करता है विद आवर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सो जैसे हमारा माइंड सोच सकता है, सो दैट काइंड ऑफ एबिलिटी को अचीव करने के लिए एक कंप्यूटिंग मॉडल which is being emerging, that is soft computing. I hope it clears. Soft computing is an emerging approach to computing which parallel the remarkable ability of human mind to reason and learn in an environment of uncertainty and imprecision. Then soft computing consists of several computing paradigms. Computing paradigms means a computing techniques. Soft computing, या फिर we can also say that कि soft computing बहुत सारे उनके बहुत सारे components होते हैं, like mainly we have fuzzy systems, neural networks and genetics algorithm. These are three main components or computing paradigms of soft computing, but these three are not only computing paradigms. We have also swarm intelligence, chaos theory, probabilistic reasoning and many more. हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। फजी सेट क्या होता है? फजी सेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नॉलेज बाय फजी इफ देन रूल्स। देन न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड फॉर लर्निंग एंड एडेप्टेशन, and genetic algorithm is for evolutionary computation. We will discuss all these in detail. Now let's have a look of historical development of soft computing. अगर स्टार्ट से देखें तो जेनेटिक एल्गोरिदम इन 1970 हॉलैंड द्वारा दिया गया था। देन वी हैव इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग व्हिच वाज given by Fogel in 1962, then evolutionary strategy that was given by Reichenberg in 1965, then genetic programming which was given by Koza in 1992. And when we combine all for these kind of strategies or techniques, then Reichenberg again in 1960 combined all these to consider as a evolutionary computing. Again, we combine these all evolutionary computing, neural network and fuzzy logic. Then these three terms are collected together to be a part of to be known as a soft computing. तो soft computing का ये तीनों main parts होते हैं। कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे genetics algorithm. So obviously genetics algorithm is a part of evolutionary computing. So we do not need to be confused. यहाँ पे बहुत सारे मशीन लर्निंग्स मॉडल भी दिख जाएंगे which is a part of course soft computing. So we do not, this is a basic development history. There could be a bit minute difference between the number of evolutions, but this is how the development history of soft computing is. Then let's talk about the goal of soft computing. Why we need soft computing? See, the
30%, 70% problems of real time are of soft computing type, like where imprecision, approximation and uncertainty is there, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन की संभावनाएं बहुत कम है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास 70% है. सो दैट्स व्हाई वी नीड सॉफ्ट कंप्यूटिंग or a kind of computing that can solve these problems where uncertainty is in huge quantity. So, soft computing is a multidisciplinary field to construct a new generation of artificial intelligence that is known as computational intelligence. How computational intelligence is different from our conventional intelligence, conventional AI. In conventional AI, we have not self-learning mechanism, which is in computational intelligence. The second one is the main goal of soft computing is to develop intelligent machine to provide solutions to real world problem. Again, soft computing का मेन गोल होता है वैसे इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करना, वैसे इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करना जो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके. लाइक अभी अगले पल में बारिश की क्या संभावना है, मौसम कैसे रहेंगे, स्टॉक मार्केट का क्या रेशियो होने का है. So these kind of all predictions, assumption kind of solution can be solved using soft computing. Soft computing is to develop intelligent machine to provide real world problems which are not modeled or too difficult to model mathematically. The aim of soft computing is to exploit the tolerance of approximation, uncertainty, imprecision, and partial truth in order to achieve close resemblance with human-like decision making. Right? So let's talk about these three main terms which is frequent in this subject. Approximation में जो हमारा मॉडल का फीचर होता है वो सिमिलर होता है हमारे रियल वन से, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. देन अनसर्टेनिटी में हम श्योर नहीं होते कि हमारा जो फीचर हमने जो डिडक्ट किया है अपने मॉडल से, या फिर हमने जो फीचर को सिलेक्ट किया है क्या वह हमारे रियल वन से एग्जैक्टली सेम है या ना, या नहीं है. दैट्स वेयर वी आर नॉट श्योर, सो दैट्स इज अनसर्टेनिटी. देन एम्प्रिसिजन मीन्स हमारा जो मॉडल है वो मॉडल का जो फीचर एग्जैक्टली रियल वन से सेम तो नहीं है बट वेरी क्लोज टू देम है. सो हियर यू कैन बी कंफ्यूज्ड आल्सो, लाइक जो इम्प्रिसिजन का डेफिनेशन है व्हिच सीम्स लाइक द डेफिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन. सो बट लेट इट बी, we have covered this one. Then we talk about characteristic of soft computing. What is the characteristic of soft computing? Soft computing may not give you the precise solution. Of course, soft computing can give you very approximate solution to the real one, but cannot give you the 100% accurate one. The algorithms of soft computing are adaptive in nature, means due to the environment, due to the as per the need, the algorithms adapt themselves. Then soft computing does not require any mathematical modeling for problem solving, like in hard computing के concept में या फिर हमारे conventional computing के concept में हमारे पास एक mathematical model होता है that we also call as algorithm to solve any kind of problem. But in the case of soft computing, we do not have any specific algorithm to solve the problem. Either we create that model, either we train data continuously to find out the perfect model so that we can get the approximate accurate answer. It uses some biological inspired methodologies such as genetics evolution and behavior human nervous system. And behavior again is a part of swarm intelligence, which is a part of unit 5 that will be discussed later. हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है वो देखा, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग के गोल क्या है, देन कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्ट कंप्यूटिंग के क्या है. अब हम देखते हैं हार्ड कंप्यूटिंग क्या है. As per Professor Zadeh, any computing is hard computing if precise result is guaranteed, control action is unambiguous. Unambiguous means हमें certainty, surety 100% है कि हमें result आएगा ही आएगा. Then there is a formally defined mathematical model or algorithm. So if all these three things are in any computing, then we can call it as a hard computing. Then we have example of hard computing like searching and sorting techniques. Whatever we have available so far comes under hard computing. Then solving numerical problem like integration, differentiation, roots of polynomial. These all comes under the hard computing because we have a proper algorithm for all these. तो ये सब हमारे हार्ड कंप्यूटिंग हो गए. अब एक बेसिक्स डिफरेंस देखते हैं हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, बिकॉज exam perspective, so this is very important and many in many times it has been asked.
सो हार्ड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। इन द केस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग हमें एग्जैक्ट इनपुट डेटा नहीं चाहिए, वी कैन डील विथ एम्बिग्यूअस एंड नॉइजी डेटा ऑल्सो। एम्बिग्यूअस डेटा मतलब जिसके मतलब क्लियर नहीं होते, विच इज नॉट इन क्लियर, विच हैज नॉट क्लियर मीनिंग। हार्ड कंप्यूटिंग जो वो होता है विच इज बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक, crisp system and software. Binary logic means either the answer will be true or the answer will be false. But in the case of soft computing, it is based on fuzzy logic. Fuzzy logic का जो आंसर होता है हमेशा रेंज करता है 0 से 1 के बीच में। ये it could be 0.1, it could be 0.95 also. So there is no binary answers. देन हार्ड कंप्यूटिंग हमें गारंटी करता है एक्यूरेट रिजल्ट एंड प्रिसाइज रिजल्ट का, बट इन द केस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इट डज नॉट गारंटी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिजल्ट। देन हार्ड कंप्यूटिंग हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिजन कि हमें प्रिसाइज्ड वैल्यू मिलेंगे, बट इन द केस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, मतलब हमें नियरली एक्यूरेट वैल्यू मिल सकते हैं बट नॉट always accurate. It could be also nearly 50% accurate, it could be also very less accurate. So this is what the difference, basic difference between hard computing and soft computing. एग्जाम्पल अगर हम बात करें हार्ड कंप्यूटिंग के, तो एनी कन्वेंशनल प्रॉब्लम जिसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम और एनी मैथमेटिकल मॉडल, दैट कम्स अंडर हार्ड कंप्यूटिंग। बट सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जैसे हमें वेदर फॉरकास्ट करना है, लाइक हमें किसी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, तो इन द केस दैट ऑल एग्जांपल्स कम्स अंडर सॉफ्ट कंप्यूटिंग। So let's see the applications of soft computing. What are the various applications of soft computing? Soft computing के applications तो numerous हैं in this era because the way technologies are changing, the market of soft computing is growing rapidly. So application first is handwritten character recognition, either it is in Hindi, English, in any language. Handwritten character recognition is one of the major application of soft computing. Image processing and data compression. I mean, image processing, which is used in either the cybercrime field or medical field, or almost in various new sectors where image processing is very important. Automotive system manufacturing. When we talk about mechatronics, like electronics and mechanical engineering, that's where soft computing also plays a major role to automate their system. Then bioinformatics, again in healthcare department, then power system analysis, soft computing based architecture, decision support system, investment and trading, and many more. इसके अलावा lots of soft computing uh, applications are there, like we can say, of course the machine learning is a part of it. So pattern recognition, where we use soft computing, lots of in IoT sector where we are trying to automate all the, again this is a part of automotive system manufacturing. So these are all the soft computing application. Then let's see the classification of soft computing. What are the classification of soft computing? सॉफ्ट कंप्यूटिंग को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज अप्रोक्सीमेट रीजनिंग, that is also known as fuzzy reasoning, and then functional approximation, that is also called as randomized functional approximation and randomized search. These are the two categories of soft computing. Again approximate reasoning को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, that is probabilistic model and fuzzy logic, एंड रैंडम फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन एंड रेंडमाइज सर्च को अगेन दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, दैट इज न्यूरल नेटवर्क एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम, अगेन जिसे हम जेनेटिक्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। सो अब हम इन सारे सब टॉपिक्स को थोड़े डिटेल में देखते हैं, लाइक फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम, दैट इज जेनेटिक एल्गोरिदम, बिकॉज दीज थ्री टॉपिक्स आर frequent in this subject. So let's have a brief about these all topics. फर्स्ट हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क. व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क इज एन आर्टिफिशियल representation of the human brain that tries to simulate its learning process. An artificial neural network, often called as ANN, is a neural network, or we can also call it as a neural net. Traditionally, the word neural network is referred to a network of biological neurons in the nervous system that process and transmit information. I hope it is very easy to understand. Artificial neural network is an interconnected group of artificial neurons that uses a mathematical model or computational model for information processing based on a connectionist approach to computation.
Then artificial neural networks are made for interconnecting artificial neurons which may share some properties of biological neural networks. These are the basic concepts about neural network. Neural network को किसने coin किया था? Again we had seen in the history of soft computing. Then we have genetic algorithm. Genetic algorithm adaptive heuristic search algorithm है जो कि बेस्ड होता है evolutionary ideas of natural selection and genetics, how human mind thinks, how human mind takes decision. So based upon that, that's how the genetic algorithm works too. As genetics algorithm are a part of evolutionary computing, a rapidly growing area of artificial intelligence. Genetic algorithms are inspired by Darwin's theory, that is about evolution, survival of the fittest. One who is fit will survive, one who is not fit may not survive. That's the uh, inspiration behind genetic algorithm. Genetic algorithm represent an intelligent exploitation of random search used to solve optimization problem. So genetic algorithm का use to optimization problem को solve करने में होता है. Genetic algorithm, although randomized, exploit historical information to direct the search into the region of the better performance with the search space. In nature, competition among individuals for scanty resources result in the fittest individual dominating over the bigger ones. चूंकि हमारे पास resources की scarcity बहुत ज़्यादा है, so again the one who is fit will survive and one who is fit will dominate over the bigger ones. This is the concept. Then let's see why we need genetic. What is the introduction of genetics algorithm? Solving problems means looking for solution, which is best among others. Finding the solution to a problem is often thought, like in computer science and AI, as a process of search through the space of possible solution. Possible solution के space में एक process of search क्या होता है? The set of possible solution that defines the search space. हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन का सेट जो डिफाइन करता है सर्च स्पेस को, जिसे हम स्टेट स्पेस भी कहते हैं फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम. सॉल्यूशन और पार्शियल सॉल्यूशंस आर viewed एज पॉइंट्स इन द सर्च स्पेस. सो स्टेट सर्च स्पेस एक टॉपिक भी है. तो स्टेट सर्च स्पेस क्या होता है? हमारे उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशन का सेट होता है. और वो उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टेट सर्च स्पेस में? स्टेट सर्च स्पेस में एज अ पॉइंट हम डिफाइन करते हैं. जितने पॉइंट होंगे हमारे स्टेट सर्च स्पेस में, उतने हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं. In engineering and mathematics, as a process of optimization, the problem are the first formulated as mathematical models expressed in terms of functions, and then to find a solution, discover the parameters that optimize the model or the functional components that provide optimal system performance. So हम ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या करते हैं? पहले तो हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं एज अ मैथमेटिकल मॉडल, जो कि किसके टर्म में होता है? फंक्शंस के टर्म में हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. देन वी फाइंड अ सॉल्यूशन एंड आल्सो डिस्कवर द पैरामीटर्स दैट कैन ऑप्टिमाइज आवर मॉडल. हम उस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं कि जिनकी मदद से हम अपने मॉडल को और मैथमेटिकल मॉडल को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ ऑप्टिमल सिस्टम परफॉर्मेंस. Genetic algorithm, why we need it? Because it is better than conventional AI, it is more robust. What does it mean? Unlike older system, the genetic algorithm do not break easily even if the input changes slightly or even the presence of reasonable noise. हमारी कन्वेंशनल सिस्टम में क्या है कि हमारे पास अगर इनपुट हम चेंज कर देंगे तो इट इज़ 100% श्योर दैट द आउटपुट विल ऑटोमेटिकली चेंज, एंड even the same mathematical model or same algorithm may not work for the different input if input is being changed. But in the case of GA or genetic algorithm, if we change the input, then the same mathematical model will may process the input and give the uh, according output, and also it can bear with some reasonable noise. But in case of conventional or older AI system, it is not possible to bear any kind of reasonable noise. Again, while performing search in large state space मतलब हमारे पास जब सॉल्यूशंस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए और फिर वैसे स्टेट में वेयर मल्टी मॉडल स्टेट सर्च और इन डायमेंशनल सर्फेस, a genetic algorithm offered significant benefits over many other typical search optimization techniques like linear programming, heuristic, depth first, breadth first search.
मतलब हमारे पास अगर मल्टीपल्स और n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो उनमें से बेटर वन कौन है, हाउ टू डिसाइड, फॉर दैट वी कैन यूज जेनेटिक एल्गोरिदम बिकॉज इट गिव्स अ, it has a edge over on the conventional search optimization techniques. That is a famous saying about genetic algorithm. Let's have a look over it. Genetic algorithms are good at taking large, potentially huge search space and navigating them, looking for optimal combination of things the solution one might not otherwise find in a lifetime. It means genetic algorithm sometimes जो हमारे huge search space से जो solution हमें देता है, that is rare in the case of other search optimization techniques. Let's have a few concept system. Sorry, fuzzy systems include fuzzy logic and fuzzy set theory. Of course, fuzzy system are a combination of fuzzy logic or fuzzy set theory. Or we can also say that any system which works upon fuzzy logic is called as fuzzy system. It's very obvious. For understanding fuzzy logic, we need to understand few concepts like knowledge exists in two distinct form. कौन से, पहले subjective knowledge and second is first one is objective knowledge and second one is subjective knowledge. Objective knowledge is what? It exists in mathematical form that is used in engineering problems. जो mathematical term में हमारे जो भी knowledge होते हैं that are objective knowledge. But in the case of subjective knowledge which are in the form of linguistic form. Linguistic form means हमारे भाषा में like Hindi, English, French, German, these are all called as linguistic form. तो हमारे पास दो तरह के knowledge है, subjective and objective. A fuzzy system can handle simultaneously the numerical data and the linguistic knowledge. मतलब fuzzy system हमारे दोनों तरह के knowledge को handle कर सकता है एक ही बार में. Fuzzy system provides opportunities for modeling of condition which are inherently imprecise defined. मतलब वैसे provide opportunities for वैसे condition को भी मॉडल कर सकते हैं हमारा fuzzy system which is inherently imprecisely defined. Many real world problems have been modeled, simulated and replicated with the help of fuzzy systems. The application of fuzzy systems are like information retrieval system, navigation system and robot vision. These are the application of fuzzy system. Expert system design have become easy because their domains are inherently fuzzy and can now be handled better. Examples are decision support system, financial planners, diagnostic system, and meteorological system. Now let's have a look over fuzzy logic, a simple form of logic called as two-valued logic in the study of truth tables and logic circuit. Here the possible values are true as 1 and false as 0. This is how a simple logic works. But in case of fuzzy logic which treats truth as a continuous quantity ranging from 0 to 1. तो fuzzy logic के लिए true ना ही तो 1 होता है और false ना ही 0 होता है, but it's a continuous value between 0 and 1. It could be 0.50, it could be 0.75, it could be 0.25. So it depends that which one we will consider as a truth value, which one we will consider as a false value. Definition is derived from Fuzzy logic is derived from fuzzy set theory, dealing with reasoning that is approximate rather than precisely deduced from classical two-valued logic. Fuzzy logic is the application of fuzzy set theory. Fuzzy logic allows set membership values to range inclusively between 0 and 1. जो हमारे membership values होते हैं जिससे हम mu से denote करते हैं, वो हमारा range करता है between 0 and 1. Fuzzy logic is capable of handling inherently imprecise concepts, and fuzzy logic allows in linguistic form that set membership values to imprecise concepts like slightly, quite, and very. These are all the terms of fuzzy logic or fuzzy values. We can say these are the slightly, quite, very, because we cannot define it whether slightly means how much slight and quite means how much quite. So this is how we have covered the three major topics. The first one was the what is soft computing introduction, what were the development history of soft computing. Then we discussed the goals of soft computing. Then we talked about the characteristic of soft computing. Then we discussed what exactly hard computing is. Then
we discussed the differences between hard computing and soft computing. Then we saw the application of soft computing. Then we discussed the classification of soft computing. And then lastly, we defined some terminologies which is frequent in this subject, that is neural network, genetic algorithm, and fuzzy logic. So I hope this helps somewhere. I hope it helps for in your preparation of upcoming exams. Thank you very